Today we are going to talk about the types of viruses or taxonomy, taxonomy. But before going any further, I want you to clear some points, uh, which was that viruses, as we in the continuation from the previous lecture, we knew about the morphology, the structure of virus, and a brief history of virus. Now, the capsid, which is the immediate outermost covering and that protects the genome inside it. The genome may be the RNA or DNA, whatever. So this capsid is actually a protective covering, and in some viruses it may contain enzyme which assist cell penetration during replication. It also stimulates the immune response during periods of diseases. And as you know that some may have envelope outside their capsid or may not have envelope. Where do viruses come from? What is their evolution? What is their history? So, scientists agree that viruses don't have a single common ancestor as bacteria have, as other eukaryotic cells have, but they have to agree on a single hypothesis about virus origin. So there are different hypotheses that tells us about how they evolve or how they come into being in this world. So the first one, the devolution or the regressive hypothesis, it suggests that viruses evolved from free living cells that have lost all their functions, and the only information that was retained was in the form of this nucleotide, or you can say this genome, which may be RNA or DNA, and then it can be used by another cell's machinery. That's why they are considered as in the borderline of living and non-living things. Then we have the escapist or progressive hypothesis, which suggests that viruses originated from RNA and DNA molecules that escaped from a host cell. The third one tells us the self-replicating hypothesis, which proposes that viruses and cellular organisms evolved together, with both viruses and cells originating from self-replicating molecules present in the pre-cellular world. एवोल्यूशन ऑफ वायरसेस के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी कोई कॉमन सिंगल एंसेस्टर नहीं है, और वायरसेस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इनके पास कोई और ऑर्गेनील नहीं है जैसे कि आपकी यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास है. तो इंडिपेंडेंटली दे कैन नॉट हैंडल एनीथिंग, दे कैन नॉट रीप्रोड्यूस देमसेल्व्स, दे कैन नॉट रिप्लिकेट देमसेल्व्स. तो उसके लिए क्या है कि इनको होस्ट सेल के अंदर आना ज़रूरी है. तो ये आए कहाँ से? ये या तो सिर्फ RNAs होते हैं या DNAs होते हैं, ये आए कहाँ से? इस बारे में डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, डिफरेंट थॉट्स हैं. और उसमें द फर्स्ट वन जो डेवोल्यूशन या रिग्रेसिव हाइपोथेसिस है, वो ये कहती है कि वायरसेस जो हैं वो फ्री लिविंग सेल से ही प्रोड्यूस हुए, ऐसे सेल्स जिनकी तमाम तर ऑर्गेनील्स जो हैं या तमाम तर फंक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो चुके थे, और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन रह गई थी वो इन द फॉर्म ऑफ दिस जीनोम रह गई, यानी DNA और RNA उनके रह गए, और उसके बाद जो है वो वायरस की शक्ल अख्तियार कर गए. एस्केपिस्ट या प्रोग्रेसिव हाइपोथेसिस ये बताती है कि वायरसेस जो हैं वो RNA और DNA मॉलिक्यूल से ही बने, जो कि होस्ट सेल से एस्केप होते चले गए आहिस्ता आहिस्ता. और सेल्फ रिप्लिकेटिंग हाइपोथेसिस ये प्रपोज करती है कि जब बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो सिर्फ सेलुलर वर्ल्ड था, प्री सेलुलर वर्ल्ड था, तो उस वक्त सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जब इवॉल्व हो रहे थे, बन रहे थे, तो उनके साथ ही साथ वायरसेस जो हैं वो भी वजूद में आ गए. यानी सेल्फ रिप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स के साथ साथ ही ये वायरसेस भी ओरिजिनेट होते रहे. सो दीज आर द डिफरेंट थ्योरीज अबाउट एवोल्यूशन ऑफ वायरसेस. Then we have shapes of viruses. In a broad way, we can classify them, or we can place them in three types. The first one is the helical virus. The second one is polyhedral viruses, in which
The most common is icosahedral virus, and then we have complex viruses. हेलिकल वायरस जिसकी एक एग्जांपल आपको पहले दिखाई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलिकल वायरस इस तरह का होता है, यानी ये जो आरएनए इसको इस तरह की रिबन लाइक प्रोटीन जो है, कैप्सिड जो है, वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है और इसकी शेप कुछ रॉड टाइप की इस तरह की थी आपके पास. सो दिस इज़ द example of helical virus. Helical capsid, it consists of a ribbon-like protein that forms a spiral around the nucleic acid, as you have seen in tobacco mosaic virus. Then we have polyhedral viruses. Polyhedral viruses have many sites. For example, picorna virus and human adenovirus, which is being showed here. These are polyhedral viruses. The most common capsid in the polyhedral viruses is the icosahedral or icosahedron. Like this, you can see here. It has 20 triangular faces, and it is fixed in a certain type of symmetry, so it attains the shape of this type of capsid with triangular faces. 20 इसके अंदर होते हैं और ये इस तरह से आपस में मिले हुए होते हैं कि आपको इस तरह की शेप में नज़र आएंगे. सो दिस इज़ आइकोसाहेड्रॉन. देन वी हैव कॉम्प्लेक्स कैप्सिड. ये आपके पास कॉम्प्लेक्स कैप्सिड की एग्जांपल है. इन दिस वी हैव बैक्टीरियोफेजेस, जो बैक्टीरिया के वायरसेस होते हैं, और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेलिकल एंड आइकोसाहेड्रल शेप्स. एंड like this one is the icosahedral, the head, which is known as the head of the virus. Then we have helical virus, which is the tail, and these are the tail fibers, which works same as the spikes that are protruding from these kind of polyhedral viruses. जो इनके spikes का काम है वो ये tail fibers जो है वो करते हैं. So they helps to attach to the certain type of bacteria when the virus enters inside the host cell. Taxonomy, as you know, taxonomy means classification, grouping of organisms. So earlier, when there was no greater knowledge about viruses, or we have no idea about viruses, you can say in the earlier 20th century, the virologists classified viruses by the type of host cell they infect. जिस तरह का स्ट्रक्चर उनका होता था या जिस तरह के होस्ट सेल को वो इन्फेक्ट करते थे, जैसे कि हम ये देखते हैं बैक्टीरियोफेजेस जो है बैक्टीरियल वायरसेस हैं. प्लांट वायरसेस जैसे टोबैको मोज़ाइक वायरस डिफरेंट है, वो एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करता, और एनिमल वायरसेस डिफरेंट है. तो animal viruses, when we are talking about animal cells, then they can be identified by the type of cells or tissue they infect. For instance, if they are infecting skin, they are called as dermotropic viruses. If they are infecting lung cells, then they are known as pneumotropic, etc. इस तरह से हम इनको, अगर आपके नर्व सेल्स को डैमेज करें तो वो न्यूरोट्रॉपिक होंगे, अगर आपके किडनीज़ को डैमेज करें तो नेफ्रोट्रॉपिक. इस तरह करके हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं. But with the passage of time, when more was learned about viruses at the molecular level, then they were identified by the type and structure of their nucleic acid or genome, which they contain inside their capsid, and their method of replication, the host range, किस किस को कर सकते हैं. ये भी होता है कभी. अब nowadays we can see that animal viruses are being jumped from animals and then causing infections in humans, and other chemical and physical characteristics of course. तो इनको एक तरह की सिंगल पेज पर लाने के लिए एक सिंगल यूनिवर्सल टैक्सोनॉमिक स्कीम इनके लिए, वायरसेस के लिए अरेंज की गई, एंड दैट वाज back in 1966 by an international committee which was established in 1966, known as International Committee on Taxonomy of Viruses, and we can abbreviate it as ICTV. This committee meets every 4 years,
to establish the rules for classifying viruses. Up till now, the ICTV has assigned more than 5,000 members of viruses, 208 families and 203 genera. 8 ऑर्डर्स हैं और उसमें 5,000 मेंबर्स को 108 फैमिलीज़ में और 203 जनरा में प्लेस किया गया है. देन ICTV places greatest weight or greatest stress on specific properties to define families. जैसे उनकी न्यूक्लिक एसिड, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड किस तरह का है, उनमें एनवेलप प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उनकी सिमेट्री कैसी है, कैप्सिड की डायमेंशन कैसी है, ये और विरियन की, ये सारी चीज़ें देखते हुए वो एक वायरस को उसकी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराते हैं. सबसे पहले हमारे पास जब हम टैक्सोनॉमी करते हैं तो ऑर्डर होता है. ऑर्डर जब वायरसेस का आता है, ये ICTV के मुताबिक है. सो जब ऑर्डर आता है तो वो एंड होता है वायरेल में. उसके बाद आपके पास फैमिली है, फैमिली का नेम हमेशा विराइडी में एंड होगा. उसके बाद सब फैमिली का नेम विराइनी में ऐड होगा. फिर उसके पास आपके पास जेनरस आएंगे एंड देन यू हैव जीनस एंड देन स्पीशी. स्पीशी नेम जो है वो अमूमन इंग्लिश में होता है और उसके एंड में वायरस लगता है, तो इट इज़ बीइंग अंडरस्टूड ईजीली और उसमें कोई लैटिन या ग्रीक वर्ड नहीं है. बाकी ऑर्डर में या आपको फैमिली नेम में नज़र आएगी. जैसे दिस इज़ मोनोनेगा वायरल्स. मोनो मीन्स सिंगल, नेगा मीन्स नेगेटिव, सो दैट मीन्स कि they are single stranded negative sense viruses which are grouped in this order. Then we have paramyxoviridae. Para Greek word para means by the side of and myxo means mucus, so they may be attached by the side of the mucous membranes. Then we have paramyxoviridae and then we have rubella which is an old name of mumps, rubella virus. And this morbili is also a Latin word that means the short form of disease, diminutive form of disease, morbili, so that means diseased virus. In rubella, then we have type of genus which is rubella mumps virus, and the virus name is of course mumps virus. मॉर्बिली वायरस में हमारे पास जो जीनस है वो मीजल्स है और नेम ऑफ द स्पीशी मीजल्स वायरस है. सो ऑर्डर देन फैमिली देन सब फैमिली देन जेनरस देन जीनस एंड देन स्पीशी. और यहाँ पे और जगह नहीं बन रही थी तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि इस जेनरा के बाद आपके पास जीनस एंड देन द नेम ऑफ द स्पीशी विच एंड्स इन वायरस. So we were talking about their classification. There is another way of classifying viruses which is quite easy and understandable, which is by the virtue of the nucleic acid or genome they contain. You know that viruses can either have a DNA in its inside its capsid or an RNA. इन दोनों में से they cannot contain both. So that is the way they are far way different from other organisms. Of course, they have subclasses depending upon the properties of nucleic acid they contain, the way they replicate inside the host cells and all. Another way or another more convenient way of classifying viruses is by Baltimore's scheme of classification, which tells us how the virus is being replicated inside the host cell. And by that, all viruses can be grouped under any of the 7 classes of the scheme. Baltimore's scheme is a way far easy method of classifying viruses, and it is being designed or given by David Baltimore, the Nobel laureate, a person, a very learned scientist who has given us the identification of HIV, the way it replicates inside the human cell. He was the one who discovered the mechanism by which HIV replicates itself inside the human host cell.
So David Baltimore, for his contribution, is being um, given Nobel Prize, and he's a Nobel laureate, a very learned scientist. तो उनकी स्कीम है अकॉर्डिंग टू विच इट इज़ वेरी इजी टू क्लासीफाई viruses into any of these 7 classes. तो हम इनके अंदर जो है 7 classes में किसी तरह का भी वायरस हो इन्हीं में फिक्स होगा, यानी अगर मिलियंस बिलियंस ऑफ वायरसेस भी आ जाएं तो उनकी जो जीनोम रेप्लिकेशन है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, वो इन्हीं में से किसी एक में फिट होगी. सो अगर इसको आप समझ लेते हैं तो देन यू कैन क्लासीफाई वायरसेस इन अ मोर सिंपल एंड ईजी वे. बिफोर दैट आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वायरसेस जो हैं, सारे वायरसेस चाहे वो कहीं के भी हों, कौन से भी हों, कोई भी जीनोम हो उनके अंदर, दे हैव टू मेक मैसेंजर आरएनए. ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ बीइंग प्लेस्ड इन द सेंटर. कोई भी किसी भी टाइप का वायरस हो उसको क्या बनाना होगा, मैसेंजर आरएनए, और फिर वो इस काबिल होगा कि प्रोटीन्स बनेंगी और मज़ीद जो है वायरसेस अपने आप को डुप्लिकेट कर सकेंगे. तो सिंपलेस्ट रूल मेकिंग प्रोटीन का आपके पास क्या है, जो आपके मुताबिक या हमारी डिस्कवरी है, जो अब तक ह्यूमन रेस को पता है कि प्रोटीन्स जो बनते हैं, प्रोटीन्स किस तरह बनते हैं कि डीएनए ट्रांसक्राइब होता है मैसेंजर आरएनए में, और फिर मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होता है प्रोटीन्स में बाय द राइबोसोम्स. लेकिन क्योंकि आपके जो वायरसेस हैं उनके पास कोई ऑर्गेनील मौजूद नहीं है, दे डोंट हैव राइबोसोम्स, दे डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, so they cannot generate energy, they cannot self replicate or self encode themselves. So for that they need host machinery. इसीलिए उनको होस्ट मशीनरी की ज़रूरत होती है, और जिसके बाद वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं या अपने आप को रिप्लिकेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो हमारे पास जो वायरसेस की या जीनोम की, अकॉर्डिंग टू द जीनोम, यानी जो न्यूक्लिक एसिड उनके पास है, उसमें हमारे पास क्या क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लस सेंस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए माइनस सेंस. ये प्लस और माइनस सेंस में आगे आपको समझाऊंगी. फिर हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है that can replicate with DNA intermediate, and then we have double stranded DNA genome that replicates with RNA intermediate. Genomes they can be of various shapes, different shapes हो सकती है उनकी. They can be linear, circular, they can be segmented, they can be gapped, they may have covalently attached proteins in them. All these are the possibilities of viral genome. So first let's talk about the first one, which is double stranded DNA. Double stranded DNA आपके पास मौजूद है, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल एडिनोवायरस, herpes simplex वायरस की है. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम जो है, दे डोमिनेट द बैक्टीरियल वर्ल्ड. ये ह्यूमन रेसेस में इनके इन्फेक्शंस कम है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया में ये डोमिनेट करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ये वायरस जो है कॉज करता है डिजीज़. इट कैन बी ट्रांसक्राइब्ड. डीएनए वायरस है तो डीएनए में आपको पता है कोड्स होते हैं और कोड्स ऑन होते हैं. इट कैन ट्रांसक्राइब इटसेल्फ इनटू मैसेंजर आरएनए. ये अपने आप को ट्रांसक्राइब करेगा मैसेंजर आरएनए में, एंड देन इट विल ट्रांसलेट, मैसेंजर आरएनए विल ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन्स. सो दे आर कॉपीड बाय होस्ट डीएनए पॉलीमरेज. आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज होस्ट सेल में मौजूद होता है, जो हमारी वर्किंग करता है, यानी डीएनए से ट्रांसक्राइब कराता है मैसेंजर आरएनए में. तो हर होस्ट सेल के अंदर डीएनए पॉलीमरेज मौजूद होता है, जिसको ये वायरल डीएनए जो है ये यूज़ करता है, और ये
मज़ीद अपने या हाईजैक करता है उसको, और सेल्स के डीएनए पॉलीमरेज को हाईजैक करने के बाद ये मैसेंजर आरएनए बनाता है और फिर अपनी मज़ीद कॉपीज़ बनाता चला जाता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल है एडिनोवायरस। एडिनोवायरस दे कॉजेज़ लॉट्स ऑफ इन्फेक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक और आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को भी ये वायरस जो इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा हर्पीस वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कॉजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलर्जीज और वेरी कॉमन टाइप ऑफ वायरस विच इज़ फाउंड in this world. Then we have papilloma viruses that causes, it's also included in this double stranded DNA क्लास 1 जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हर्पीस वायरस है, पॉक्स वायरस है, एडिनो वायरस आपके पास। इसके अलावा पेपिलोमा वायरसेस हैं हमारे पास। इसके पास हमारे पास पोलियोमा वायरसेस हैं, पॉक्स वायरसेस हैं, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा इनके अंदर ही आते हैं। सो दे आर काइंड ऑफ इनकी साइजेस भी डिफ़र करते हैं, बड़े होते हैं थोड़े से। इनको हम फर्दर इस तरह देख सकते हैं एग्जांपल्स में। तो आरएनए है, ये डीएनए वायरस है, ये आप देख सकते हैं इसकी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। इसमें लीनियर डीएनए होता है जो मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। इसकी एनवेलप और कैप्सिड शेड क्या है, ये नेकेड है, पॉलीहेड्रल है और ह्यूमन एडिनो वायरस से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करता है और इसका टिपिकल साइज़ 75 नैनोमीटर के मुताबिक है, यानी दिस काइंड ऑफ अ शेप जो आपको वहाँ पे शेप्स में भी हमने देखा था एडिनो वायरस। देन वी हैव हर्पीस विराइडी, इट्स ऑल्सो अ लीनियर डीएनए। ये एनवेलप्ड होता है, ये नेकेड होता है, ये एनवेलप्ड होता है, ये भी पॉलीहेड्रल है। और सिम्प्लेक्स वायरस और वेरिसेलो वायरस जिसमें चिकन पॉक्स, शिंगल्स आपको कॉज करते हैं। ओरल और जेनाइटल हर्पीस भी कॉज करते हैं। इसका भी साइज़ काफ़ी बड़ा है, 120 to 200 नैनोमीटर। इसके बाद आपके पास है पॉक्स विराइडी, ये भी लीनियर डीएनए है, ठीक है। इसमें आपके पास एनवेलप्ड है, कॉम्प्लेक्स शेप होती है इनकी, यानी मिक्सड होगी, हेलिकल और पॉलीहेड्रल की मिक्स होगी। इसमें हमारे पास ऑर्थो पॉक्स वायरस है जिसमें स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स के एग्जांपल है। दे आर क्वाइट बिगर, यू कैन सी 230 to 270 नैनोमीटर्स तक इनकी डायमेंशंस हैं। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑल्सो अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देन वी हैव पेपोवा वेराइडी। पेपोवा वेराइडी का सर्कुलर डीएनए होता है, ये भी नेकेड है, दैट मीन्स इट डजंट हैव एनवेलप। ये भी पॉलीहेड्रल है। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस हैं, दे कॉजेज वार्ड्स, सर्वाइकल एंड पेनाइल कैंसर्स एंड देयर टिपिकल साइज इज 45 to 55 nanometer shapes like this. Then we have Hepadina variety, they are enveloped, they are polyhedral, they are hepatitis B virus and it is about 40 to 55 नैनोमीटर। इसकी एक ख़ासियत है जो मैं आपको लेटर ऑन अभी बताऊंगी पहले। सो दिस इज़ व्हाट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड इट कैन ट्रांसक्राइब इटसेल्फ इनटू अ मैसेंजर आरएनए एंड देन प्रोटीन्स विल बी फॉर्म्ड। देन वी हैव अ सेकंड टाइप ऑफ डीएनए दैट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए itself cannot directly transcribe into messenger RNA. तो ये you just have to keep in mind that this single stranded DNA cannot transcribe independently unless and until it has to repair itself and make another strand. That means this has to go on to make a double strand DNA and then it can make double stranded DNA and then it can make messenger RNA. So इसमें हमारे पास पार्वो वायरस की एग्जांपल है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA प्लस सेंस जो भी होगा और इसके बाद ही ये
अपने आप को दोबारा डबल स्ट्रैंड में चेंज करेगा, डबल स्ट्रैंड में चेंज करेगा, और उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब करेगा मैसेंजर आरएनए। इसमें जो आपको मैंने कभी एग्जांपल बताई थी, द 7th वन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम, ये वाला हमारे पास मौजूद है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम। ये गैप्ड है, आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ गैप्ड, इट्स नॉट कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बट इट्स गैप्ड। यहाँ पे आप देखें, यहाँ तक और यहाँ तक, यानी कंप्लीट नहीं है, ये हेपेटाइटिस बी वायरस है। दिस सर्कल एंड पार्शली डबल स्ट्रैंडेड, they also cannot transcribe into messenger RNA directly unless and until it changes itself or repair itself into a double stranded DNA. So first, either this one, the single stranded, or the gapped one, they have to change themselves or repair themselves into double stranded DNA, and then this double stranded DNA can transcribe into messenger RNA, and then they can produce proteins by using the host cells ribosomes. This gapped hepatitis B virus is unusual in sense that it can also encode reverse transcriptase, an enzyme that takes an RNA and makes a DNA copy. Hepatitis B virus is an example of it. So that's why it replicates with RNA intermediate, which you have mentioned earlier. This is hepatitis B virus. Although it's a gapped double-stranded virus, it changes itself into a double-stranded, and then it can change itself into messenger RNA. अभी तक जो हमने देखा था यही था कि DNA transcribes itself into messenger RNA, but this virus, it can take that RNA and with the help of reverse transcriptase, an unusual enzyme, it can make one copy of DNA and then the double stranded DNA, and then it can make further copies of itself. तो यहाँ पे ये बात समझने की है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो या डबल स्ट्रैंडेड हो या सेगमेंटेड हो, जैसे भी हो, ये फर्स्ट किस में चेंज होंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में. लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस इज़ अनयूजुअल इन अ वे दैट इट कैन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज itself फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए इनटू डीएनए. ये भी कर सकता है. यानी ये जो अभी सेंट्रल डॉगमा है आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस का, वो यही है कि डीएनए ट्रांसक्राइब होता है मैसेंजर आरएनए में और मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होता है प्रोटीन्स में विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स. लेकिन ये वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस, एक एंजाइम इनके अंदर मौजूद होता है विच इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो इस तरह के आरएनए को लेते हुए इसको पहले चेंज करता है, इसको चेंज करता है एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में और फिर करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. So this is unusual for this hepatitis B virus, and that's why this double-stranded DNA genome can replicate with RNA intermediate. ये अपनी मज़ीद कॉपीज़ बनाते हैं RNA intermediate से, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू मज़ीद DNA की कॉपीज़ बनाते चले जाते हैं. और this is a very fatal kind of virus, about infecting 350 million people around the world. और अब हमारे पास इसकी वैक्सीन है, so it can be prevented. हेपेटाइटिस बी वायरस. तो यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा था, यहाँ पे है हेपेरिना विराइडी, ये आपके पास हेपेटाइटिस बी वायरस. इसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में आपके पास है पार्वोविराइडी, जो नॉन एनवेलप्ड होता है, नेकेड है, पॉलीहेड्रल है. एग्जांपल इसमें हमारे पास B19 की है. इसमें हमारे पास जो इन्फेक्शंस कॉज करता है, ये 5th डिजीज़ इराइथीमा इन्फेक्टियोजम चिल्ड्रन में कॉज करता है. इसका भी साइज़ टिपिकली काफ़ी छोटा है, 22 नैनोमीटर के अराउंड है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट DNA viruses. Now in the next lecture I'll tell you about RNA viruses.